Well, in a major development to Judge Supreme Court bench of Justices Suryakant and Justice Ujjal Bhuyan has granted conditional bail to the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the CBI case linked to Liquorgate investigation. He was formally arrested by the CBI on the 26th of June 2024, even when he was in the ED custody. The Supreme Court has granted him bail but has also upheld the arrest by the CBI, saying it wasn't illegal. While the Aam Aadmi Party is celebrating the verdict with sweets and dhols and loud chants of Satyamev Jayate, it's also important to mention that when Arvind Kejriwal walks out of jail, he will not have the authority to perform his chief ministerial duties. As per the bail conditions, Arvind Kejriwal cannot visit the Secretariat, he cannot sign official files, he cannot publicly make comments about the case, and he cannot access official files related to the case, and he strictly cannot interact with any witness in the case. Let's go across to my colleagues Bhavtosh as well as Isha joining us on the broadcast. Bhavtosh, take us to what happened in the Supreme Court, the observations that have been made by the Supreme Court while granting bail to the Chief Minister, and when he is expected to walk out of jail. Well, as far as Supreme Court is concerned, the order was reserved on 5th September, and this morning order was given by bench of Justice Suryakant and Justice Bhuyan. Justice Suryakant was the first one to deliver the verdict, and then Justice Bhuyan gave his verdict. Now, both of them have, in fact, given the grounds on which the bail has been given. Justice Suryakant has upheld the arrest of CBI, saying that the arrest of CBI under Section 41, Part A, Part 2 of CRPC is legal, but he has said that because the trial is not getting over anytime soon, that's the reason why he has given the bail. As far as Justice Bhuyan is concerned, he has said that the arrest is untenable. The word he has used is untenable, and he has said that that's the reason why he has given bail to Arvind Kejriwal. But he has also said that he is not, in fact, very comfortable with the grounds on which the bail was earlier given by the Supreme Court. Importantly, Justice Bhuyan has also said that there is a perception that CBI is a caged parrot, and that they should in fact make efforts that dispel the notion that CBI is a caged parrot. Importantly, he had some very strong observation as far as this arrest is concerned. So it's a split verdict when it comes to the grounds on which CBI had arrested Arvind Kejriwal. Importantly, the most important part of this verdict is the fact that Arvind Kejriwal cannot visit his office, cannot sign any files. Now, one has to wait and see whether Aam Aadmi Party will approach the Supreme Court to at least make sure that these observations are in fact deleted, or at least go to the higher bench, or whether CBI also approach to the higher bench, or at least make sure that the observation regarding the caged parrot are at least deleted, because these are very strong observation of Justice Bhuyan. But a big relief for Arvind Kejriwal, because he will be walking out of the prison after 155 days. Okay, all right. Stay with us. Let's also show our viewers how the Aam Aadmi Party is hailing the bail granted by India's highest court, starting from Sunita Kejriwal, who is hitting out at the BJP after the verdict. भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ही ये है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो, आपने एजेंसियों को अपना केज पैरट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरट की तरह से काम कर रही है। देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो, अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा, तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। आज भी सीबीआई एक पिंजरे में कैद तोते की तरह है, जिसको आज़ाद करने की ज़रूरत है। तो आज तो मौका है कि देश के गृह मंत्री जो सीधे सीबीआई को संभालते हैं, वो देश को इसके बारे में जवाब दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके बारे में उनको क्या कहना है। बीजेपी ने पहले दिन से ये कहा
और मैं दोहरा देता हूं, बीजेपी के एक एक प्रवक्ता ने पहले दिन से ये कहा कि अगर कुछ नहीं किया तो बेल क्यों नहीं मिल रही है, बेल क्यों नहीं मिल रही है, बेल क्यों नहीं मिल रही है। तो भैया बेल मिल गई, मिल गई, मिल गई। अब वो तर्क और कुतर्क खत्म हो गए। आम आदमी पार्टी को और ताकत मिलेगी और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। Now, while granting Arvind Kejriwal bail, Justice Ujjwal Bhuyan, in a scathing judgment, questioned the timing of his arrest by the CBI. Calling the arrest unjustified, he said that the arrest seemed to be aimed at frustrating Kejriwal's release in a separate ED case. Justice Bhuyan also criticized the CBI, saying that the agency must dispel the notion of being a caged parrot and emphasized that the investigation should be seen as fair and impartial. Further questioning the CBI's approach, the justice also said that non-cooperation or evasive replies during interrogation does not equal self-incrimination. In fact, the observations made by Justice Bhuyan and his caged parrot reference has given ammunition to the Aam Aadmi Party. It is lashing out at the BJP and is saying that their conspiracy seems to have failed. The BJP too is responding in equal measure, saying Kejriwal, who has been granted conditional bail by the Supreme Court, has no moral authority to continue as the Chief Minister because he still stands accused of corruption. और ये कहना गलत नहीं होगा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। एक आरोपी बेल पर बाहर आ रहा है, वो दिल्ली का दोषी है, वो दिल्ली का अपराधी है, अपराध उन्होंने दिल्ली के साथ किया है। लेकिन कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते। जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को लाओ। दिल्ली को इतना तकलीफ दे दिया है, कितनी तकलीफें और देंगे अरविंद केजरीवाल आप दिल्ली को। जो लोग अभी सत्य की जीत हुई है, सत्य जो है वो जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, ये घिसी पिटी जो नारे देते हैं, उन्हें ये पहले तय करना चाहिए कि कब सत्य की हार होती है और कब सत्य की जीत होती है, ये तय कर लें। अपनी सुविधा के अनुसार सत्य की हार और जीत अगर ये गढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई फायदा होगा। कोई भी जमानत उस किसी भी गुनाहगार या किसी भी अपराधी या किसी भी आरोपी के दोषमुक्त होने का प्रमाण पत्र नहीं होगा।